Getting to the approaches to leadership, first we have the trait approach. The trait approach to leadership is based on early leadership research that assumed that a good leader is born, not made. The mainstream of this research attempted to describe successful leaders as precisely as possible. अच्छा, इसकी जो रीजनिंग दी गई वो ये थी दैट अगर एक सक्सेसफुल लीडर के ट्रेट्स का एक कंप्लीट प्रोफाइल बना लिया जाए तो ये आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा कि इंडिविजुअल्स में से कौन से ऐसे हैं जिनको लीडरशिप पोजीशंस पे प्लेस किया जा सकता है और कौन से हैं जो कि कभी भी अच्छे लीडर नहीं बन सकते. Many of the early studies that attempted to summarize these traits of successful leaders were documented. One of these summaries concludes that successful leaders tend to possess few characteristics. वो characteristics are mainly intelligence, including judgment and verbal ability. Then there has to be an achievement of leader in the past in scholarship or athletics. Then another leadership trait is emotional maturity and stability. Then it's dependability, persistence, and a drive कि वो continually achieve करें चीजें. Then the skill to participate socially and adapt to various groups that comes under the human skills. Then a desire for status and socio-economic position. लेकिन ये जितनी भी ट्रेट स्टडीज थी इनकी जो इवैल्यूएशंस हुई उससे यही कंक्लूड हुआ कि इनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो एक्चुअली कंसिस्टेंट नहीं हैं. One researcher even says that 50 years of study have failed to produce one personality trait or set of qualities that can be used consistently to differentiate leaders from non-leaders. Still, researchers continue to examine the issue. So, आज के ज़माने में we can say कि जो trait approach है वो vague है और वो practical nahi hai for the most part. Then came the situational approach to leadership. Leadership studies shifted emphasis from the trait approach to the situational approach, and this approach states or suggests that leadership style must be appropriately matched to the situation the leader faces. And जो situational approach का थोड़ा और modern version है, it's based on the assumption that each instance of leadership is different and therefore requires a unique combination of leaders, followers and leadership situations. इसका मतलब ये कि एक functional equation form की जा सकती है इस सारे interaction की कि जिसमें successful leadership is actually a function of the leader, the follower and the situation. तो इसका मतलब ये कि एक लीडर कैसा परफॉर्म कर रहा है वो उस लीडरशिप की क्वालिटीज पे भी डिपेंड करता है, उसके फॉलोअर की क्वालिटीज पे भी डिपेंड करता है. आई मीन हाउ much cooperative and how well adaptive the followers are. That's also what counts. And the situation. तो इन तीन चीजों की, इन तीन फैक्टर्स की मदद से आपकी लीडरशिप सक्सेस डिफाइन हो सकती है. अच्छा, after both of these approaches, there came the contingency theory. The situational model focused on the characteristics of followers. Fiedler, he's a famous sociologist, or I guess a management expert. He and his associates looked at some other elements of the organizational situation to assess when one leadership style is more effective than another. अच्छा, फीडलर की जो थ्योरी का स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये था कि देयर हैज टू बी एन एक्सटेंट to which the leader's style is task oriented or relationship or people oriented. Fiedler considered a person's leadership style to be relatively fixed and difficult to change. Therefore, the basic idea is to match the leader's style with the situation most favorable for his or her effectiveness. तो इनके मुताबिक एक लीडर अपनी ट्रेट्स को और अपनी पर्सनालिटी को चेंज नहीं कर सकता, तो बेहतर यही है कि आप सिचुएशन का एनालिसिस करके और उस हिसाब से लीडर्स को एलोकेट करें. By diagnosing leadership style and the organizational situation, the correct fit can be arranged. अच्छा,
एक पर्सन की लीडरशिप स्टाइल कितनी सूटेबल है, उसकी डिटर्मिनेशन कैसे होगी, वेदर द सिचुएशन इज फेवरेबल और अनफेवरेबल फॉर द लीडर. The favorability of a leadership situation can be analyzed in terms of three elements. एक तो ये कि लीडर और फॉलोअर्स के दरमियान जो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स है वो कैसा है. देन द डिग्री ऑफ टास्क स्ट्रक्चर, कि टास्क का जो स्ट्रक्चर है वो क्या बहुत सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन. And thirdly, the extent to which the leader has formal authority over followers. तो पहले सिचुएशन के इन एलिमेंट्स को एनालाइज करना चाहिए, एंड देन द लीडर शुड बी असाइन्ड, बिकॉज he cannot have any control over his leadership traits, as Fiedler's contingency theory suggests.